I'm Sanjeev Kumar at Plutus Science. Now, let's go with economic reform या economic policies that we brought since independence. इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि 1948 में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, why it worst in 1980s, 90s, what was the role of Manmohan Singh, and later on, what are the impact of LPG reform, क्या कुछ challenges हैं, और how our economy is progressing well at present time. Okay, so ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे thoroughly. So probably you not only take the interest within this lecture, but it is also highly beneficial for your awareness as well as for exam preparation. So India's economic reform and challenges. So we are starting with this India's economic reform and various challenges. So जब भी हम इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये लाइसेंस राज, ये कई बार सुनने को मिलता है कि व्हाट डज इट मीन भाई लाइसेंस राज. पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, फिर ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू डिसमेंटल दिस लाइसेंस राज एंड लिबरलाइज मोस्ट ऑफ द लॉज. तो इसकी बात करेंगे. So what is this license Raj? Suppose that for some of the items, yeah, some of the businesses, nowadays still you require license. Consider pistol, gun, ammunition material, etc. आपको इनके लिए लाइसेंस चाहिए. बहुत सारे जो गवर्नमेंट की मोनोपोली के अंडर डिपार्टमेंट हैं उनके लिए आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए. So similarly, such kind of license used to require for very very normal business. It used to kill entrepreneurial dream of people. लोगों के ड्रीम होते थे, सपने होते थे कि शायद वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट इट वाज सो कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ लाइसेंस राज. लाइसेंस राज इतना स्ट्रॉन्ग था कि सपोज दैट इफ यू वांट टू ओपन अ बिजनेस ऑफ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, ओपन बिजनेस फॉर ब्रेड, you are planning to manufacture the bread. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए. You will think that for manufacturing biscuit, manufacturing bread, for daily food items, what is the requirement of license? Just do registration and start your business, start your processing. But at that time period, license was required. Further, अगर आपको, ये तो ओपनिंग की बात हो गई for bread manufacturing. सपोज दैट अगर ब्रेड का साइज आपको बढ़ाना है, घटाना है, शेप चेंज करना है, ठीक है, फॉर शेप पर्पस, व्हाट यू रिक्वायर, अगेन लाइसेंस. आपको फिर से लाइसेंस चाहिए. सपोज दैट यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन 10%, 10% आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है. ओके, वट एवर यू प्रोड्यूस एट लाइसेंस टाइम पीरियड, अगर आपको जल्दी ही 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद प्रोडक्शन बढ़ाना है, सो गैस व्हाट यू रिक्वायर, अगेन यू रिक्वायर लाइसेंस. तो हर काम के लिए लाइसेंस चाहिए. सो दैट वाज द फेज ऑफ लाइसेंस राज. एंड सम ऑफ द रूमर्स सेज दैट कि इफ गॉड वांट टू क्रिएट सर्टेन अपॉर्चुनिटी, अगर गॉड कोई एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस भी चलाना चाहता है, देन हिज फाइल आल्सो कीप ऑन पेंडिंग फॉर द लाइसेंस बाय दीज बाबूज. प्रोबेबली ये बाबूज जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, ये हमेशा फाइल को पेंडिंग रखते थे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. एंड देयर वर आल्सो ब्राइवरीज या घूस वगैरह काफी ज्यादा चलता था, या फाइल्स कीप ऑन पेंडिंग 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 कंटिन्यूसली, और उनको जल्दी से क्लियर कराना है तो अंडर द टेबल यू नीड टू प्रोवाइड सम फंड, सम मनी एटसेट्रा. सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड. नाउ thanks to economic reform, now what happens if you want to start any business? अगर आप आज कोई business start करना चाहते हो, so from your bed you can just register under Company Act of 2013 and you can start the business. So license raj was very very complex. Now I am moving towards industrial policy.
how industrial policies were determined, especially during 1948, although there were certain reforms, amendments we continuously did after the 1948, was just have a look over basic industrial policy resolution of 1948. So industrial policy resolution, yeah, industrial policies of 1948. What we did, we categorize our industries into four group. हमने 1948 में अपनी बिजनेस या इंडस्ट्रीज को चार ग्रुप में डिवाइड कर लिया. ग्रुप वन, दिस ग्रुप जनरली कंसिस्ट ऑफ बेसिक आइटम्स. इसमें सारी बेसिक इंडस्ट्रीज थी. इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज. Means what kind of basic industries? Nowadays you notice that whatever industries are 100% under the monopoly of the government are part of basic industries at that time period and now as well. जैसे आर्म एंड एम्यूनिशन है, जैसे डिफेंस है, या इंडियन रेलवे है, ओके, या स्पेस है. ऑल सच थिंग्स including atomic energy etc are part of your basic industries. They are still almost 100% part of the government of India, but still government of India trying to attract more private investment, including in defense, including in Indian railway, etc. But still all areas have not been opened. But at that time period, even you can't think that private individual can be allowed, can be participate in such kind of industries. So that was group one. Group 1 industry. Now moving towards group 2 industry. And group 2, you have certain key industries here. कुछ key industries था. What kind of key industries here? Now whatever are today core industries, जो भी आप 8 core industries देखते हो, ये सारी core industries at that time period were key industries. Now take example of it, just like coal industries, iron and steel industries, just like fertilizer industries, shipbuilding industries, telegraph, telegram, या mineral exploration. ये सारी जो industries हैं, that were part of group 2. Now in group 3 they keep 18 industries. यहाँ पर उन्होंने 18 industries को put किया. Now whatever you notice today, all such automobile, tractor, tools, machines, various kind of equipments, all such things were part of these 18 industries. ठीक है, तो ये 18 industries वाले ग्रुप में था. At the time period, government used to have fully control 100% state monopoly over the group 1. स्टेट का पूरी तरह से मोनोपोली था. Here over the group 2, state has responsibility for a smooth transaction, for progress, for development of these industries. State has full responsibility. Means without state, nobody can do anything. It was 100% owned by government. It was also near about 100% owned by the government. Now, 18 industries. Here, government has regulation and supervision. State regulation and supervision. Now, state used to regulate, just like today, state used to regulate what? Electricity. State used to regulate fertilizer. Okay, state used to regulate energy. So at that time period, there was complete state regulation. Means state determining कि उसका price क्या होगा, per unit price कितना होगा, कि 200 unit free में मिलेगा, या कितना amount कितने प्राइस में मिलेगा. इट इंटरली डिटरमाइंड बाय स्टेट. स्टेट मींस यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है. ओके, या तो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी. नाउ group 4 was related to other industries remaining which is not covered by group 1. group 2, group 3 were part of group 4. So ये सारी industries जो है group 4 में
other industries. Now, do you think that private individuals were free to invest in other industries as well? No, I started with the license Raj. Means over uh, you know, for starting your business, any kind of business, even in food product, etc., in daily items production, you require license. So यहाँ पर भी क्या था? State can intervene at any point of time. State can regulate, state can supervise, state can monitor whenever it thinks fit. मीन्स जब कभी गवर्नमेंट का मन होगा तब गवर्नमेंट जाकर के कहेगी इस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस प्रोडक्ट का प्राइस कम कीजिए। गवर्नमेंट कहेगी अपनी बिजनेस का साइज कम कीजिए, या गवर्नमेंट कहेगी कि आपकी बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो मोर देन 1 करोड़ है तो आपको फिर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, लाइक दैट। सो एवरीथिंग यूज्ड टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। सब कुछ गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रहा था यहाँ पर। ओके, नाउ दिस मॉडल टेक्निकली, अगर इस मॉडल की बात करोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आइडिया कहाँ से आया कि our industries need to be divided in 4 groups. So we have backing of it in 1917. It was October Revolution that was going on in Russia. This Lenin belongs to Bolshevik party, and Bolshevik party overthrew the government that existed at that time period and came to the power. When Lenin came to the power, he started to regulate, he started to categorize, he started to monopolize most of the industries of the state. After Lenin, from 1920s to 30s, it was Stalin, yeah, Joseph Stalin. Even it is considered as Stalin regime was more brutal than Lenin regime as well. Okay, so काफी दोनों ही बड़ा brutal regime थी, and they used to develop forceful target, forceful collectivization of agriculture. Okay, means people used to do work as daily wage worker, and state have all the ownership of the production, state have over control, state used to set target, and people used to fulfill that target of the state forcefully. Okay, just like that in defense, in railway, government do hiring, and people used to provide service. Nobody is owner of railway, nobody is owner of DRDO. People just used to do serving. ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दे यूज टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टास्क. Similarly, over the agriculture, lot of large field used to be collectivized and people used to work individually. ठीक है, तो लोग डेली वेज वर्कर की तरह काम करते थे. So this was the idea behind this industrial policy resolution, as Russia did collectivization of agricultural land as well as collectivization of industries. तो इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप किया, एंड इन बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज दे रिसीव अराउंड 2 to 2.5 times ग्रोथ. नाउ मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेटस. अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ 1980s to 1990s. Now this is the phase when things जनरली मूव टूवर्ड्स वर्स्ट कंडीशन, और जब वर्स्ट कंडीशन अकर होता है तो इट इज द बेस्ट टाइम फॉर द रिफॉर्म, बिकॉज देर इज नो फर्दर होप फॉर कैरिंग दैट मॉडल. यू नीड टू चेंज द थिंग्स. जब आप सब कुछ लूज कर जाते हो तो फिर से एक रीस्टार्टिंग होती है, नई पॉलिसीज होती है, नया रिफॉर्म होता है, बिकॉज nobody have faith in such kind of policies, such kind of rules and regulations. Now government of India in this phase, government of India started to take huge loan. So बहुत ज्यादा borrowing हुआ at this time period.
Now, what was the reason behind this huge borrowing? There was very high oil price. Oil काफी ज्यादा प्राइस पर सेल हो रहे थे. And what was the reason behind it? Reason behind it was Gulf War, Iran and Iraq War, 1980s to 88, लगभग 7 से 8 साल चला. After that, Iraq ruled by dictator Saddam Hussein, and he also invaded Kuwait in 90s. So in 19 when he invaded the Kuwait, then oil price also shoots up. Then USA led coalition support Operation Desert Storm was performed, and Kuwait was liberated. So during this time period, what happens? जो NRI थे, ठीक है, एक तो ऑयल प्राइस शूट अप हो गया, और दूसरा था कि जो NRI थे, they used to send dollar to India. They started to withdraw dollar from India because they lost most of their job during wartime period, and they started to take more money rather than sending money to India. Now coming to forex reserve, कि forex reserve का क्या situation था उस समय पर? Forex reserve means forex currency या foreign currency reserve. Foreign currency reserve just reduced to $1 billion. केवल 1 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रह गया था. नाउ व्हाट इज द एट प्रेजेंट? दिस एट प्रेजेंट सीम्स टू बी अराउंड $686 बिलियन. लगभग अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 2025 में ये इतना है, और उस समय पर ये 1990s में वो उतना था. नाउ why we require this forex reserve? हमें क्यों चाहिए forex reserve? Forex reserve हमें चाहिए स्पेशली फॉर मीटिंग अवर इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए वी रिक्वायर फॉरेक्स रिजर्व बिकॉज इंडिया डिपेंडेंट ओवर एनर्जी ऑन अदर कंट्रीज. हमें ऑयल परचेज करने के लिए, गैस परचेज करने के लिए, या सम अदर एसेंशियल आइटम परचेज करने के लिए वी रिक्वायर फॉरेक्स रिजर्व. Because in international market, everybody asks for the dollar. Everybody asks for a few foreign currencies. Nobody attracted towards the rupee. Okay. So at that time period, forex reserve was just reduced to 1 billion, and this 1 billion was sufficient for 1 week normal requirement, एक week की normal requirement के लिए, और लगभग 3 week की हमारा essential requirement के लिए. So means it was a grim condition. Energy crisis, economic crisis towards verge of collapse. Means entire economy collapse होने वाली थी. Because हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना रिजर्व है कि हम एक वीक शायद अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे, और एसेंशियल आइटम्स का मैक्सिमम 3 weeks. So that was the condition of that time period. Okay. Then what led to its huge borrowing? Huge borrowing के कारण क्या हुआ? That sovereign rating of India fall. Sovereign rating में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ because of this economic crisis, as well as India borrowed huge money at short term basis. Okay. Sovereign rating fall. Now what does mean by sovereign rating? जैसे आपका सिविल स्कोर होता है when you go to the bank. बैंक में जब कभी आप अप्रोच करते हो फॉर द लोन, देन बैंक यूज्ड टू लुक फॉर सिविल स्कोर. अभी महाराष्ट्र सीएम ने डिक्लेयर किया है कि बैंक नीड टू अवॉइड सिविल स्कोर फॉर द फार्मर्स व्हाइल ग्रांटिंग लोन. बैंक जब कभी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करें तो वो सिविल स्कोर को इग्नोर कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं. It is only for providing relief to the farmers, because bank hesitate to give loan, to offer loan to the farmers, because they do not maintain good civil score. सिविल स्कोर वैसा होता है कि आपका रिलेशन बैंक के साथ कैसा है, आपने पास्ट में लोन अच्छे से जमा किया है, नहीं किया है, कि आपने कोई डिफॉल्ट किया है. सो सिविल स्कोर डिटरमाइन बेस्ड ऑन हाउ यू मेंटेन योर रिलेशन विद द बैंक. क्या परफेक्ट टाइम पर आपने हर समय इंस्टॉलमेंट पे किया है, नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो योर सिविल स्कोर लाइकली टू बी डाउन. ऐसे ही सोवरन रेटिंग होती है कि आपने सही टाइम पर
इंटरेस्ट या लोन रिटर्न किया है, नहीं किया है. अगर नहीं किया है, then that means sovereign rating likely to be down. Further, it also depend on borrowing. अगर आपने बहुत ज़्यादा इनकम के अकॉर्डिंग, सपोज दैट योर इनकम इज जस्ट 1 लाख, लेकिन आपने बोरोइंग 10 लाख कर रखा है, सो योर क्रेडिट स्कोर लाइकली टू बी लो. सिमिलरली इंडिया का भी स्कोर लो हो गया. और दूसरा एक और प्रॉब्लम आया इससे, इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इन कंट्री इंक्रीजेस because the value of rupee was continuously deteriorating, and we have very poor forex reserve, and there was more demand of goods or services while production of goods and services were very poor. So finally what we approaches for economic reform. Now this is the time period of economic reform of 1991 to 1993. Okay, so India at that time period generally put family jewelry या country jewelry as mortgage या as collateral. सपोज दैट आपको अगर बैंक से लोन लेना है, तो समटाइम्स इफ यू डू नॉट हैव गुड क्रेडिट हिस्ट्री, गुड सिविल स्कोर, so bank ask you to deposit some collateral. So India put its jewelry, its gold, its silver as collateral, okay, for taking loan, taking money. It was the condition, just like a poor family keep his gold at mortgage property as collateral property to purchase grocery item. उसको कुछ ग्रोसरी का आइटम लेना है, कुछ दूध दही या बिस्किट ब्रेड, कुछ ऐसा आइटम लेना है, और उसके लिए उसने गोल्ड पुट किया है. इट वाज द जस्ट सिमिलर सिचुएशन एट दैट टाइम पीरियड कि पुअर फैमिली ने अपनी ग्रांड माँ का एक ज्वेलरी आइटम कोलेटरल रख दिया है. ओके, so at that time period India put near about 67 tons of gold. इंडिया ने इतना गोल्ड पुट किया इन बैंक ऑफ लंदन to borrow money, and this money was also borrowed at high interest rate because of poor credit rating. जब आपका स्कोर कम होता है, जब आपकी इकोनॉमी पुअर होती है, इकोनॉमिक कंडीशन, सो बैंक ऑल्सो एक्सप्लॉइट यू मोर. तो फिर बैंक को थोड़ा रिस्क ज़्यादा लगता है, और इस रिस्क को जनरली वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है या एक्सप्लॉइट करना चाहता है. सो इंडिया ऑल्सो टेक लोन एट हाई इंटरेस्ट रेट. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन? अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें अभी 2025 में, उस समय हमारा सारा गोल्ड ज़्यादातर स्विस बैंक या लंदन बैंक के पास में था. नाउ एट प्रेजेंट इन 2025, as per report, overall Indians have more gold than top 10 commercial bank of the world. Now if we talk about USA, UK, Germany, Italy, France, China, Switzerland, okay, what else, India, Japan, Turkey, all these countries का अगर गोल्ड, बैंक का गोल्ड अगर एक्यूमुलेट कर लिया जाए और इंडियंस का गोल्ड एक्यूमुलेट कर लिया जाए, then we will realize that Indians has even far more gold reserve than whatever these banks have today. Now how this phase started? This phase started with Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh, at that time period, Narasimha Rao was the Prime Minister of India, and he generally believed on this Iron Man. Manmohan Singh was the Iron Man.
he entered parliament just like Iron Man inside the Avenger. जैसे Avenger में एक Iron Man enter करता है वैसे ही वो parliament में enter किए and he proposed, put forward for end of license raj. लाइसेंस राज को अब एंड करने का टाइम आ गया था. When he started his speech in the parliament, then even opposition clapped. This was the time period like that there is no electricity for years, and after that there is a hope for the electricity, or electricity has just come. एक ऐसा टाइम था कि सालों भर बिल्कुल अंधेरा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर से एक एकदम से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वाओ, एवरीबडी इज जुबिलियंट लाइक दैट. ओके, सो it was the condition. Now everybody realized that no more license raj. We need to end this license raj because time has come. So what he proposed for LPG reform. LPG means make your laws more liberal. What does mean by liberal laws? Means restrict license, make it easy for the business. Do not keep file pending. Do not unnecessarily waste time of entrepreneurs. Rather than attracting entrepreneurs, do not restrict them, rather attract them. Take some initiatives so that they feel ease. They should not depend for so long over the bureaucrats. बाबूज पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना हो. तो इस तरह का लिबरल लॉज. Make little bit hiring firing easy. Further, reduce government intervention in several ways. Let's allow private individuals to do whatever they want, especially in some of the less sensitive matters for daily common items. Privatization means let's allow private investment. Agar private investors want to create certain jobs, want to invest in particular production, maybe for manufacturing car, manufacturing bike, maybe for manufacturing tractor, tools, machines, equipments, let's allow them. Do not create unnecessarily state monopoly. केवल एक कंपनी से काम नहीं चलेगा. सिर्फ BSNL can't provide efficient internet services, efficient telephonic services. Let's allow different other services, maybe Reliance, maybe Airtel, maybe Vodafone, etc. etc. Okay, so privatization, globalization, let's reduce tariff. Do not create unnecessary barrier. Do not restrict too much import. Let's export more and more. Sometimes what happens when we want to become self-dependent, when we started to become isolated, कि किसी से कोई contract ही नहीं रखना है, then we sometimes become more vulnerable because we do not compete, because we are not exchanging goods, we are not taking the mutual benefits that globe is taking. Okay, so thanks to this LPG reform, world come to Indian plates and Indians move to world app. वर्ल्ड इंडियन प्लेट्स पर आया और इंडियन वर्ल्ड ऐप पर गए. नाउ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इट इज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Earlier during Janata government, when some of the large investment started to disinvest it, just like PepsiCo, etc., started to disinvest it in India because of too much complexities, because of too frequent intervention of the government, then the ministers of trade and commerce, external affair ministers, they were celebrating this event. Some of the large companies disinvested from the India. तो उस समय हमें लगता था कि फॉरेन्स जो हैं, if they are coming towards India, their purpose is only exploitation, because we have huge worry. We were afraid. क्यों afraid हुए थे? Because of colonial history. क्योंकि probably in the 16th century, Europeans comes, या East India Company
started trade with India, and later gradually it started to acquire all the economic power as well as political power, administrative power. So most of the powers is started to acquire and make India as a colony. Means original Indians became subordinate to East India Company rule regulations. So they have such kind of feeling कि अगर foreign company आ रही है तो its intention is not good. It can colonize the country. It can overrule. It likely to be create monopoly in this area. So do not allow it. But its consequences were what? We lose our capacity. We lose competition. We lose creative environment. We lose development of goods, tools, machines, equipment, yeah, overall competitive business environment in the country. Now, government has also introduced masala bond, etc. If foreign wants to invest in Indian rupee, if foreigners want to invest in Indian rupee, they can invest. What is this masala bond? Masala bond is a bond which issued in foreign country. In a state of foreign currency, it is denominated in Indian rupee. इसका मतलब है कि एक बॉन्ड है, एक पेपर है जो इशू किया जाता है फॉरेन कंट्री में, उस पर लोकल करेंसी या फॉरेन करेंसी रिटर्न की बजाय इंडियन रुपी रिटर्न किया जाता है. मीन्स now foreigners, especially the NRI, they need to, yeah, OCI, they need to spend money only in Indian rupee, and they used to earn money in Indian rupee as well. Now, why this was introduced? It was introduced to protect the interest of Indian companies, Indian market. Because there is high volatility of rupee versus foreign currency, dollar और rupee में हमेशा एक struggle चलता रहता है, and rupee most of the time is more vulnerable towards the dollar. So what happens? Suppose that at the time of investment, dollar की value 80 rupees थी, लेकिन after 5 years, dollar की value 84 rupees हो गई. So this is the loss for 4 rupees each and every dollar. Suppose that अगर किसी कंपनी ने 1 billion investment फंड रेज किया है फॉरेन कंट्री में, so 4 million ये ऐसे ही unnecessarily एडिशनल कॉस्ट हो गया उसका. Okay, so to prevent this, generally companies या government issued this masala bond. Masala bond में now you will ask why if rupee is so much volatile, why foreigners are interested in masala bond? They are interested because of high return. इसमें high return मिलता है. Suppose that अगर बॉन्ड में मसाला बॉन्ड में स्पेंड करेंगे तो 6 to 8% यील्ड उनको मिलेगा, या आप इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हो कि लगभग इतना उनको सरप्लस मिलेगा. बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसी तो प्रोबेबली वहां पर इंटरेस्ट रेट या यील्ड जो है वो कम मिलता है. बॉन्ड यील्ड लगभग 0 to 2%, 1 or 2% मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इतना ही मिलता है. ओके, सो दिस इज द कंडीशन for this masala bond. Now, government also introduced various other reform in different sectors, just like telecom. Government reduced monopoly of this BSNL. Government allowed multiple companies. Government did banking reform. Means during Indira Gandhi government, nationalization of bank, nationalization of coal, nationalization of various other industries, various other sector, it was very populist scheme. It was very admirable step that people used to love. Politicians did it not only for getting more votes, but also to get more attention, more love of the society. But technically, it became futile, it became less productive, because Indian economy या Indian people have low suitability towards this socialist economy. मीन्स स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो, इसके लिए शायद इंडिया एक उस तरह की कंट्री नहीं है जितना फॉर्मर यूएसएसआर या रसिया है, जितना शायद चाइना है, उतना इंडिया उस तरह का सूटेबल कंट्री नहीं है. यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन लाइकली टू बी वर्क वेल,
सोशलाइजेशन मे नॉट वर्क वेल इफेक्टिवली, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, सो टैक्स वगैरह में भी रिफॉर्म आया, ऑल्दो इट इज modified version of VAT, value added tax, yet uh, after introduction of GST there is significant increase in overall tax collection. Now I also discuss in the starting various challenges कि क्या कुछ challenges हैं. There are so many challenges. For every hero there is at least one or more villain. Similarly, for every economy there is one or more villains, especially the foreign economies, especially certain challenges within the domestic country. Domestic countries में कुछ challenges हैं. The very first challenge is unemployment. Unemployment एक major challenge है for India's economy. Okay, India is producing more engineer than panda produced by China. Means there are large quantity of youths who each and every year become engineer, doctor, professor, or means some of the professional course they also did, yeah, simple graduation, and they are just wondering and seeking of some suitable jobs. So jobs are not available. That is one of the major problem. Further, inequality. Some of the articles and newspaper etc. held that equality seems to be highest even during British time period at present. अभी जो inequality है, जो gap है between rich and poor seems to be higher than ever before, even during colonial regime time period. So inequality में अगर देखें तो जो top 10% है, जो top 10% है इंडियंस, वो more than 70% of wealth को accumulate किया हुआ है. More than 70% of wealth. Now, bottom 50% of poor generally fighting, looking for discount over Flipkart, Amazon, yeah, looking for survivability. Bottom 50% and top 10% enjoying most of the fruits in the economy. Very small section in the economy is earning very high money, while large section of society is earning very, very poor. ठीक है? So that is major problem. Now, agrarian crisis. Agrarian crisis, one of the major problem. Government proposed in 2016 for doubling the farmer income, but by 2025 even farmers income has not reached to 1.5 times. इतना भी नहीं हुआ. Now farmers considered as grower of food, शायद वो अन्नदाता कंसीडर किए जाते हैं, but they are struggling for their own food. Farmer can't afford nutritious food for themselves, although they are considered as grower of the foods, food producers. Okay, then for the fiscal deficit, it further this fiscal deficit seems to remain very high. Most of the time for long time period fiscal deficit काफी ज्यादा रहता है. Okay, suppose that government of India is earning 100 rupees and spending 1067 rupees like that. ये उनका earning है और ये expenditure है. At least, otherwise it may be up to 110, 109. Now it further accumulated pressure, you put more pressure over the next generation, because finally whatever is extra your expenditure, future generations need to fulfill this gap by providing more tax. Now with respect to taxation collection, there are certain loopholes, problems that existed in GST, although it has improved your overall collection, but GST sometimes by Rahul Gandhi, by opposition members, it is called as Gabbar Singh tax. Means creating lot of problem, have dismantle lot of informal businesses, organizations.
and it is very complex issues which also creating some inverted duty structure. मीन्स रॉ मटेरियल पर कई बार ड्यूटी जो टैक्स है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है और फाइनल प्रोडक्ट पर थोड़ा कम पे करना पड़ता है या कम रिसीव करना पड़ता है. सो इट इज मोर हार्मफुल फॉर द मैन्युफैक्चरर, इट इज मोर हार्मफुल फॉर द असेंबलर. जो कुछ भी असेंबलिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल पर ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और फिनिश गुड पर टैक्स कम रिसीव कर रहे हैं. सो इट इज हर्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. ठीक है, बट irrespective of these there are some other challenges, just like one babu doing 5 jobs and 10 citizens are waiting in 3 queue. एक पर्सन है जो 5 लोगों की जॉब कर रहा है, वही एनरोलमेंट भी कर रहा है, वही बैक रिकॉर्ड भी चेक कर रहा है, वही एडिटिंग भी कर रहा है, वही सर्टिफाइड भी कर रहा है. ओके, सो one babu is doing 5 jobs and 10 citizens are standing in 3 queues. 3 rows में 10 citizens क्यू में लगे हुए हैं. पहला एक इंक्वायरी वाला है, इंक्वायरी डेस्क. उसमें आफ्टर 10% आपका नंबर आया, आपने इंक्वायरी ली, फिर उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन विंडो पर चले गए या फॉर्म सबमिशन विंडो पर चले गए. वहां भी आपने 10 लोगों का करीब लाइन पूरा क्रॉस किया. फिर उसके बाद में एक मनी रिसीविंग विंडो है, वहां भी 10 लोग खड़े हुए हैं. फिर आप सिर्फ मनी सबमिट करने के लिए वहां पर गए एंड फाइनली फॉर एनदर विंडो वहां पर भी आप वेट कर रहे हैं फॉर कलेक्टिंग दिस. एंड आफ्टर स्पेंडिंग ह्यूज टाइम यू फाउंड दैट बाबूजी इज नॉट प्रेजेंट टुडे, बाबूजी आज एब्सेंट है. सो व्हाई यू स्पेंड इट 2-3 hours over there in the queue only to listen ke babuji was absent hai. So such kind of problem are still existed, but single window clearances, government's objective, minimum government, maximum governance is also objective. We have achieved good growth and digitalization, especially UPI transaction have crossed near about 86% of GDP. We can say whatever we do UPI transaction in India, it is more than GDP of all our neighbors, including Pakistan, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार. इन सभी की जो भी जीडीपी है उससे हम ज्यादा कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं. ओके, सो irrespective of certain loopholes etc, LPG reform seems to be nice, and in future there is more capitalist economy likely to be prevail in India. ठीक है, हम पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी पर थे, अब धीरे धीरे ग्रेजुअली हम मूव कर रहे हैं. सपोज दैट दिस इज द 1948 and here you have the socialist. This is your 2025. Here you have the capitalist. Now we are moving in this direction. Towards 1948 we were present here. Now we are moving towards here and we situated here. It is 1948, it is 2025. Further we are moving in this direction. Why we are moving in this direction? For best or efficient utilization of our resources, including the human resources. क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज द मेन पर्पस बिहाइंड this research and development growth of the private sector. So that's all. I hope you enjoyed this lecture and you will take benefit of this lecture. Bye bye, take care. See you in next lecture.